आप ये वीडियो देख रहे हैं या पासपोर्ट कलेक्शन लेटर बतावा था. This is something what happened. So submit your passport to VFS Global. तो उसके बारे में आगे बात करते हैं और पासपोर्ट सबमिशन. और उनका पासपोर्ट नहीं है, कोई भी ऐसा ही IRCC at that very instant only. You are 3 from 2. So now coming to the passport requirements. First and foremost, your passport should be valid for at least resident of US. So now the main thing again, mail and take a print. साथ आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट उस एनवेलप में ऐड करेंगे. अलॉन्ग फोटोज के बारे में हम ब्रीफ में बात करेंगे. थोड़ा इसके बारे में बिट ऑफ कंफ्यूजन रहता है. सो वी नीड टू सेंड द पासपोर्ट टू VFS Global. व्हाट इज द स्पेसिफिकेशंस विद रिस्पेक्ट टू द फोटोग्राफ. जो आप दो इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिएगा सो दैट वापस आ जाता है VFS Global से विदाउट स्टैम्प. But again, I am highlighting this that you visa officers will check. Yes, out of the two photographs, put the photos together. और वो ओवरलैप करती है स्टैम्प. चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो ऐसा एक लिंक आएगा बिकॉज पासपोर्ट वहीं पे डिलीवर होगा जहाँ से कॉस्ट उसी तरीके से कैलकुलेट होगा. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू शुड. नाउ देयर इज अनदर थिंग आई वांट टू शेयर हियर. पेमेंट करने के बाद आप दिए जाएंगे. इसमें एक एयरवे बिल नंबर जनरेट किया जाता है. ट्रैक मत करना उसी वक्त, ठीक है. तो सील करके ब्लू डार्ट कुरियर के लिए रेडी रख देना. देयर इज सम कंफ्यूजन. नाउ दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन स्टार्ट ट्रैकिंग. Also if you have any celebration moments, if you अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई बिलीव कि आपका रेडी फॉर वीजा मेल या पासपोर्ट कलेक्शन लेटर आ चुका होगा. तो गाइस ऐसी मेल आपको आई रहेगी. सो ये मेल डू नॉट रिप्लाई CPC ओटावा से आई बिकॉज हमारा प्राइमरी ऑफिस ओटावा था. Unfortunately, because of this pandemic, we lost our file in 2019. So yes, this is something what happened. So 24th of February को ईमेल हमें रिसीव हुई थी. सबसे पहले आपका UCI नंबर यहाँ पे दिया रहेगा, फिर एप्लीकेशन नंबर रहेगा. तो ये these both are same. Okay, so it's just like highlighted here. I don't know why. तो यहाँ पे आपका प्राइमरी एप्लीकेंट का नाम रहेगा, प्राइमरी एप्लीकेंट मेल ID, देन द प्राइमरी एप्लीकेंट नेम. नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, you will be given 30 days to submit your passport to VFS Global if you are from the country जहाँ पे visa is mandatory. So you just need to make an envelope with specified documents in the sheet. So apart from that, VFS will also send you certain set of things that you need to keep intact. So उसके बारे में आगे बात करते हैं. तो बेसिकली आपको सबसे पहले तो एक मेन चीज का ध्यान रखना which is mentioned as step 1 and it's one of the major steps when it comes to raising a request for passport submission. आप यहाँ से इन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं. रेजिंग वेब फॉर्म, अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी चेंज या आप ये 30 डेज डेडलाइन नहीं मैच कर पा रहे हो, इफ यू हैव सम इश्यूज विद योर पासपोर्ट और लेट्स से वन ऑफ द इफ यू आर कपल देन वन ऑफ द मेंबर इज समवेयर आउट और उनका पासपोर्ट नहीं है, कोई भी ऐसा इशू है wherein you are not being able to submit the passport within 30 days, you have to tell them right away using this web form. Second, there are certain steps जो आपको follow करने हैं. If in case there is some change with your marital status like marriage, divorce, legal separation or anything, so you just have to inform IRCC at that very instant only. If there is a change in your family composition, like you are 3 from 2, so then probably you have to reach out to IRCC, inform them, raising a web form. Even if it's a case of adoption, you have to tell them. If principal applicant died, or if anything bad happened, like to your relative, the sponsoring relative, with respect to the other type of visas, you have to tell them right away using the same web form.
So any change with the contact information, like a change in mailing address, email address, or telephone number, that also needs to be. Now coming to the passport requirements, why it's mentioned if you need to submit your passport is because there are two categories. If you are from a country wherein people can enter with ETA like US, so you need not to submit your passports. So if you are from a country wherein a passport is required, then you have to go through these steps. First and foremost, your passport should be valid for at least 6 months, and they should have at least 2 blank pages left. Okay, and if a child included on the passport, then 1 blank page per accompanying child. So for example, if there's a child with you, so you should have 3 blank pages at least. So these are certain steps that you can read out if in case you are in the TR category, or if your accompanying family member is a permanent resident of US, so they also have to submit their passport. Now the main thing again, to the preparation of your documents, you have to send one copy of this letter which you can take print out and then scan first, or the second option is you can directly go to Gmail and take a print, convert it into PDF format. Take a print of that particular letter, because that you have to send it to VFS as one of the component in the envelope. इसके साथ आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट उस एनवेलप में ऐड करेंगे अलॉन्ग विद 2 फोटोज के बारे में हम ब्रीफ में बात करेंगे थोड़ा सा लेटर पार्ट में. अगर आपने परमानेंट रेजिडेंस फीस नहीं पे की एट द टाइम ऑफ फिलिंग योर फॉर्म, then this is the right time to pay your fees and provide a copy of the receipt. That will also be a part of the documents जो आप VFS Global को courier करेंगे. Then on height and eye color, इसके बारे में bit of confusion रहता है. So there is no form as such अभी तक. So what you have to do, एक A4 sheet लीजिएगा. So that is your simple print out वाला paper or simple paper. Mention so how I did is just like this is my application number and the primary applicant name and height, and similarly एक और A4 sheet separately, because see अगर आप 2 लोग हैं तो you have to create 2 separate envelopes. So you have to create 2 letters. The secondary applicant, the application number would be the same, and then you have to mention the name, height, and the eye color for both the eyes. Do mention that this is for both the eyes. Okay. Now this everything would be in one package. That I'll tell you how exactly this needs to be done. So this is how it's like, as I already mentioned, that we need to send our passport to VFS Global to get that stamp. So if you are in Canada, then probably you have to read all these, like what all things that you have to do. Coming to the next part, there are certain links that they have given on pre-arrival services. इसके बारे में जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, because there are a lot of services. There are 3-4 links for job also. I also got 2-3 links with respect to the preparation. So that I'll share in the subsequent videos. अगर आप चाहते हैं that I should create a video on that, so probably you should tell me, because I have not seen much of stuff on YouTube abhi in particular topics, because these are keep on changing. So these are very agile with respect to the ongoing situations. So
coming down, what is the specifications with respect to the photographs जो आप 2 photographs भेजेंगे. So make sure you should take these things along with you. इसका एक snapshot ले लीजिएगा so that you can show it to the photographer. Go to a commercial photographer. I would strongly advise, because I have seen cases जिसमें passport वापस आ जाता है VFS Global से without stamp. So you should not do any kind of mistake there. So photograph should be 50 mm to 70 mm wide. So it's a bit larger size as compared to the passport size photo, the normal that we use in our day-to-day life. So वो आपको ध्यान रखना है. There should be no much of editing, like mostly what people do. So much of editing उसमें नहीं होना चाहिए. It should be on a plain white background. Eyes should be clearly visible, mouth closed, and a normal smile will do, but बिल्कुल like it should not look like a casual photograph. So you have to be very kind of professional photograph. Apart from that, lighting should be very clear and the basic stuff that commercial photographers mostly know. But again, I'm highlighting this that you should take these steps into consideration. इनके बिना I have seen so many cases जिसमें वापस आया है passport, so don't miss. Another thing, take this particular topic very, 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 very seriously. Photograph should be 6 months old. Why? Because when you land, obviously you might be having notice period, या आप जहाँ पे भी job कर रहे हो, it could be of 2 or 3 months. तो अब जब तक जाएंगे तो आपकी photograph कम से कम 3 या 4 months पुरानी हो चुकी होगी. So don't use old photographs, because visa officers will check, match it to your passport also. So take these things very, very, very seriously. So this is something like photograph size 70 mm, and till temple it should be 31, and overall it should be 36. Your face should be visible 36. Yes, out of the 2 photographs, it is mentioned here. उसके पीछे on the back side of the photograph, you have to mention your name first, then the date of birth, date of photograph taken, name and address of the photography studio. Now, this photography studio, you can write it also with a permanent marker. I use permanent marker, but if you have some other thing that can be used to write it over the photographic film paper, so you can use that. But make sure if you're using permanent marker thing, that let it dry for some time and then only like put it in an envelope or anywhere where you want to preserve. But if you are going for the stamp from a photographer, take some time to let it dry at the photo studio only, because there are certain instances in hurry you just put the photos together और वो overlap करती है stamp फिर दूसरी वाली photograph पे. So that should also not be done. Labels are not acceptable. आप sticker नहीं लगा सकते हैं. Just take it and put it on the photograph. So this should be completely avoidable. चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि होगा VFS को वेब फॉर्म रेज करना. So you just simply need to go to Google and type VFS Global Passport Submission Web Form. तो आपको ऐसा एक लिंक आएगा. You have to open it. Now, herein we will be using two-way courier service. Before COVID, it was like you have to go to VFS Global, submit your passport, and then you can collect also. But now they have tied up with Blue Dart, and you have to raise a request for pickup from home, and the address of home and the pickup should be the same, because passport वहीं पे deliver होगा जहाँ से वो pickup होता है. ठीक है? So once we select two-way courier service, और हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, like select your visa category. So इसमें if you are study permit holder, work permit holder, you'll select this. अगर आप PR पे हैं, like, so you just have to select this.
for have you enrolled for biometrics? Obviously yes. So location of the biometric along, यहाँ से आप अपनी लोकेशन डाल सकते हैं जहाँ पे भी आपने अपना बायोमेट्रिक दिया था. So I'll select random New Delhi here. और कितने लोग थे? So if you are 1, 2, 3, 4, how many people have given the how many people are there for passport submission? Okay, तो यहाँ पे आपको जितने passport भेजने हैं, because the cost will be calculated like this. Initially, the link generation process that I was talking at the start of the video, तो वो सब अभी eradicate हो चुका है. यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप 2 लिखेंगे तो later part of the submission में आपका cost उसी तरीके से calculate होगा. Is address same? Yes, and you need to check whether your particular area is serviceable or no. Okay, so I am putting a random pin code. तो अभी अगर आपका अवेलेबल होगा, सर्विसेबल होगा, तो आपका पूरा एड्रेस मांगा जाएगा नीचे. तो यू हैव टू ऐड एंटर द कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे जहाँ से पासपोर्ट पिकअप होना है या डिलीवर होना है. Then you will be adding the last name, first name, your application number, email ID, contact number, date of birth, and have you enrolled for premium launch. अब ये सर्विस जो है, this you can enroll only at the time of biometrics. So if you have enrolled at the time of biometrics, आप इसे yes करेंगे. Once you click on yes, then आपके पास एक लंबी सी रिसिप्ट आपको मिली होगी एट द टाइम ऑफ बायोमेट्रिक. तो उसमें से आपको ट्रैकिंग नंबर इसमें डालना है. यू हैव टू टेक अ स्कैन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसिप्ट एंड अपलोड हियर. और इफ यू आर नॉट, व्हिच आई एम द वन, हमने प्रीमियम सर्विस नहीं लिया था बिकॉज वी वर नॉट अवेयर ऑफ दिस सर्विस. तो वी वर सिलेक्टिंग नो. So do you want paid service? Yes, I would strongly recommend that you should go for yes, because at least आपके पास track रहेगा and the cost doesn't differ much. ज़्यादा फर्क नहीं है, so you can select yes on this paid service. So it's again taking me up. No. So once you upload everything, तो यहाँ पे आपके पास charges आ जाएंगे. कितने charges हैं? Now there's another thing I want to share here कि अगर आप जैसे we have selected 2 यहाँ पे, and you might have noticed कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एप्लीकेंट की डिटेल्स मांग रहे हैं. तो once you fill applicant 1 के डिटेल्स, ऑटोमेटिकली यहाँ पे applicant 2 की डिटेल्स शो होनी शुरू हो जाएंगी. so you have to fill the same for applicant 2 also. और यहाँ पे आपके पास टोटल चार्जेस आ जाएंगे. now those charges you can pay through UPI. you can use your credit card, debit card, whatsoever means you want to use. You are not allowed to go to the bank and submit, yes, but all the online means are available, so you can just go and take that receipt from your mail, or you can download it or take a snapshot also for your later reference. So पेमेंट करने के बाद आपको एक ऐसा मेल मिलेगा. ये मेल VFS Global की तरफ से आता है, लाइक सी पासपोर्ट सबमिशन @vfshelpline.com. इसमें आपको और इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे. इसमें एक एयरवे बिल नंबर जनरेट किया जाता है. अभी ये एयरवे बिल नंबर जाके ट्रैक मत करना बुक करना उसी वक्त, क्योंकि आपका पासपोर्ट सबमिट हुआ ही नहीं है तो कुछ आएगा नहीं. तो वंस इसमें आपको 3 से 5 दिन मिलते हैं, मतलब 3 से 5 दिन में दे विल कलेक्ट. तो आपको वो मैक्सिमम आई वुड से कि जिस दिन ये मेल आए आप अपने डॉक्यूमेंट सब रेडी कर लो. तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, वी नीड प्रिंट आउट ऑफ दैट IRCC वाला मेल. अपार्ट फ्रॉम दैट पासपोर्ट भी आप ओरिजिनल सबमिट करेंगे और 2 फोटोग्राफ्स. अभी VFS को आपका पासपोर्ट प्रोसेस करने के लिए IRCC के साथ दे नीड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर साइड. ठीक है. सो दोज डॉक्यूमेंट्स आर लाइक courier, SMS courier रिटर्न फॉर्म, कंसेंट फॉर्म, और ये दोनों अलग अलग एक एप्लीकेंट के लिए एक रहता है, तो इसके 2 प्रिंट लेने हैं आपको. पासपोर्ट ट्रांसमिशन लेटर इज द सेम लेटर दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, जो आपको IRCC से आया, और वैलिड पासपोर्ट. इसमें आई डोंट नो फोटोग्राफ क्यों मेंशन नहीं, बट फोटोग्राफ भी आपको ऐड करनी है. ठीक है.
इस सब चीज को आपने एक ही एनवेलप में डालना है. एनवेलप आई वुड सजेस्ट थोड़ा अच्छा एनवेलप लीजिएगा, अंदर से थ्रेडेड, बिकॉज यू ऑब्वियसली यू विल बी सेंडिंग योर ओरिजिनल पासपोर्ट. तो I don't think that you will want कि उसमें कोई प्रॉब्लम आए लेटर. सो टेक अ थिक एनवेलप, और उसमें आप दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, और इसके मैं एक चेकलिस्ट एंड ऑफ द वीडियो डाल भी दूंगा. फर्स्ट इज योर ओरिजिनल पासपोर्ट, your two photographs with name, date of birth, date of photograph, and photographer address details. Then you need SMS form, then consent form. और ये सब आपको एक एनवेलप में डाल के उस एनवेलप को सील करके ब्लू डार्ट कुरियर के लिए रेडी रख देना. तो पिकअप नॉर्मली इवनिंग्स में होता है आफ्टर 3 मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो आप जस्ट वेट ही कर सकते हैं. उसके बाद एनवेलप के ऊपर यू जस्ट हैव टू मेंशन टू द ऑफिसर VFS ग्लोबल कनाडा. इसके ऊपर ज्यादा कुछ मत लिखिएगा, बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन द मेल ऑल्सो कि एनवेलप के ऊपर कुछ नहीं लिखना है. अगर ज्यादा है तो यू कैन मेंशन फ्रॉम विद योर नेम, एड्रेस, फोन नंबर. मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर भी लिख दिया था इफ इन केस देयर इज सम कंफ्यूजन. तो ये सब स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. दैट्स इट. So once it's ready, this is the consent form and the courier request form. इसका आपको print लेना है separate for separate individuals. So like ऐसा mails आप एक primary applicant को जाता है, एक secondary applicant को जाता है. तो make sure you take a separate print for separate mails. यहाँ पे आपको PR रेफरेंस नंबर और चाइल्ड रेफरेंस नंबर मिलेगा. सो दिस इज PR रेफरेंस नंबर इज फॉर द प्राइमरी एप्लीकेंट एंड चाइल्ड रेफरेंस नंबर इज फॉर सेकेंडरी एप्लीकेंट. ये इसका फर्स्ट ही रहता है और -1 करके आता है. तो इफ दे आर मोर देन 2 then -2, -3, -4. Rest the first number is same. So good guys, we are all set to submit our passport to Blue Dart. The pickup guy will come and he will pick up your envelope. That day, late evening में it will get updated. So now this is the time when you will start tracking your envelope. So एक बार जब वो पिकअप हो तो आप उसके बाद ट्रैक करते हैं, उसको देखते. मोस्ट ऑफ द टाइम 1 या 2 दिन में दिल्ली डिलीवर हो जाता है if it's going to Delhi. So from Delhi, once it is received by VFS Global, you will receive a mail कि हमारे पास रिसीव हो गया है. एंड आफ्टर दैट once the same day you will receive another mail कि अभी we have forwarded your documents to IRCC. तो IRCC जब रिसीव हो जाएगा then we have to wait again for like 7 to 14 days I would say. ऊपर नीचे प्लस माइनस it's possible. तो उसके बाद once IRCC send that document back, your stamped passport, you will receive a mail again. We have got the passport and we will be sending it to you. The same day or the next day, you will receive a second mail that with the reference number or airway bill number. Your passport is, your document, your envelope is ready to be dispatched. So it will be dispatched to you, and in 1 or 2 days you will receive it. So as I already mentioned, it will take somewhere close to like 15 or 20 days to get your stamped envelope. And bingo, after a few days you will get your stamped envelope. Then you can celebrate because it's long awaiting process because of the pandemic, and so everyone has their own reasons. So now is the time for you to celebrate, and do celebrate. And do let me know in the comments if you have any queries with respect to the passport submission. Also, if you have any celebration moments, if you want to share, I would be more than happy to read that and to be a part some or the other way of your celebration time. Thank you guys. Don't forget to subscribe, share, and like this video. I will keep posting the बड़ों के आशीर्वाद और छोटों के प्यार के साथ आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं. उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आप लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय.